Good evening, everyone. I'm audible. Can you hear me? Yeah, we are starting now. Namaskar. Ji. So, dear friends, what we have discussed. Any question from the yesterday? Anyone having any question? So Yes, please. yesterday I was on traveling, sir. Okay. Solve repeat once more, a little bit. But we have also published video yesterday night. Have you seen that? Yeah. No Seen it. problem. Because right now we are discussing. I came from Kumbh Mela and Oh, that's great. Wonderful. uh, Okay, no problem. You will not feel little like that's like something missing. Wherever needed, that in the we will. middle I got the cut, so I called you in the middle. Okay, When I was driving, okay, not an issue. uh, I Will do. attended your class by driving while driving also, sir. Okay. Anyone else having any question regarding your study class? Ji, Can we start now? Okay. So first we will discuss some scientific explanation about the pulse. Then we'll go again and few techniques to open our channels, to open our chakras. So let's start with the first with some scientific explanation. So now I'm muting everyone. If anyone having any question, you can raise your hands. So I will give you time. Today, if you have any question, you can ask in the last. Okay. You can write down your question in the book and we can discuss in the last. Okay. So the concept of five elements or the yin yang is very wonderful. What is the concept of five elements or yin and yang? So the concept is this. We are telling the yang want to go up. The direction of yang want to moving upward. Okay. Or yang want to spread. Yang want to go all around. Yang want to expand. This is the nature of yang. On the other side, if we talk about the yin want to come back on the original place. Yin want to, like if yang is spreading, so yin is contracting. Okay. So on the one side, yang is spreading, on the other side, yin is coming back. Okay, this we know the theory of yin and yang. We can also understand in this way. So this is the nothingness. Nothingness, from the nothingness, there is the origin of yang. फॉर एग्जाम्पल वी आर सीइंग जब मेल और फीमेल का मिलन होता है और जो जाइगोट का निर्माण होता है जाइगोट द जाइगोट इज फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म ऑफ द मेल एंड ओवम ऑफ द फीमेल मेल और फीमेल के स्पर्म और ओवम से जाइगोट का निर्माण होता है जाइगोट इज लाइक ए सीड ओके नाउ फ्रॉम द जाइगोट some human is coming in the origin. So this is the yang. Yang means someone coming in the origin. कोई उत्पन्न हो रहा है कोई पैदा हो रहा है someone taking birth someone is growing
And after reaching on the maximum, जब ये maximum पर पहुंच जाता है, as it's reaching on the maximum, then it's coming back. Okay. So after the certain growth, then we are getting aging, we are getting old age, and finally we are dying. This is the common with everyone. So this is the yin. Yin means who want to come back, who want to undo everything. That is yin. So this is applicable for everywhere, whether we talk about the humans or we talk about any tree, like tree is coming from the seed, then tree becoming bigger, and one day tree will die. And again, there is a formation of the seeds. So whether we talk about the tree, whether we talk about the animals, whether we talk about the anything in this cosmos, पूरे ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज का ओरिजिन होता है और उसका अंत होता है. इसी थ्योरी को हम यिन यांग की थ्योरी कहते हैं. ओके. So in the other language, like I will give you one more example for clear understanding. So this is our car in the garage. Okay, this car is standing. ये कार अभी खड़ी हुई है. This car is standing. Then we are starting the car. First we are starting the car, starting the engine. Then we are speeding the car. Okay, तो पहले हमने कार को स्टार्ट किया. दिस द स्टेज नंबर 1. Then we are speeding the car. This is the stage number 2. Then car will be reaching on the maximum speed after certain limit. Then again, for some time, like we are on the highway, we are on the maximum speed. Then car will be on the stable speed for some time. There is some stable speed, like we are going with the same speed or the stable speed for many kilometers. Stable speed. Okay. So this is the stage number 3. तो पहले कार को स्टार्ट किया, फिर हमने स्पीड अप किया. स्टार्ट करना पहली अवस्था है, स्पीड अप करना दूसरी अवस्था है. फिर कार को हमने कई किलोमीटर तक एक स्पीड में चलाया. ओके. देन विल रिड्यूस द स्पीड. देन वी आर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ कार. ओके. कीप रिड्यूसिंग बिकॉज वी आर रीचिंग ऑन अवर डेस्टिनेशन. हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, तो कार को हम स्लो करने लगे. दिस इज द स्टेज नंबर 4, reducing. And finally we are reaching back on the garage, maybe some other garage where we have to stop the car. Finally stopping the car. So this is the stage number 5. So we can see every process having 5 stages. It is called 5 element. इसी को हम 5 element कहते हैं. Okay, fine. In the other word, we are telling stage 1 is starting the engine, that is Bud. When we are starting something, that is Bud. जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं उसे हम Bud कहते हैं. When we are speeding, it is fire. Whenever we want to speed something, is keep speeding, like 60 km per hour, then the 80 km per hour, then the 100 km per hour, then the 120 km per hour. Keep speeding, that is fire. Fire means keep speeding. Then stable speed, maybe 120 km per hour. This is the stable speed for many kilometers. That is the earth element. Earth means stability. Earth means pause. Earth means ek saman gati. Then we are reducing the speed. That is metal. Metal means reducing. Metal means aging. Metal means degeneration. चीज कम हो रही है. That is metal. Finally stopping the car. That is called ending of the phase, or ending of the phase is called water. That is water. So that's why we are telling the 5 elements means
the meaning of five element everything. So that's why we are telling means wood, fire, earth, metal, and water. Everything is five element. प्रत्येक चीज फाइव एलिमेंट है. Now, if you see, even fire we are dividing in two parts. So sometimes we can tell fire को भी हम दो बार में बांटते हैं. Like we are telling heat and hotness. Okay, let's divide the fire in two part for clear understanding. So number one, water. Water means zero when the form of seed. The second phase is wood. The third phase is fire, and fire plus means speeding and speeding till maximum. Then earth, then metal, and then water. These are the five stages. Okay. So here we can see this is the yang, wood, fire, and fire plus. This is the yang. Wood, fire, and fire plus. We can consider here this is the yang. Okay. Fine. On the other side, if we see this is the earth, metal, and water, this is the yin. Okay, so this is for understanding purpose. But whenever we are talking about the five element, the meaning of five element again, just we are making one circle. In the bottom, we are writing with a black color, that is water element. Okay. Then with the green color, we are making wood element. The wood means starting or the initiation. ये wood है. Wood का मतलब start करना. Then the meaning of fire. Fire means the maximum speed and speed, that is fire. Then the earth. And then the metal. Metal we are showing with a brown color. So I'm making with a brown color. This is the metal. So we are telling these five elements as per the TCM, the concept of TCM. Every element having some meridian, like liver, gallbladder, stomach, spleen, and all. So wood element means starting. wood का मतलब है कुछ start करना. लेकिन अगर आप गौर से देखें, so first thing is the water. Something is starting from the water. अगर seed है तभी तो वृक्ष बनेगा. Okay. If the seed is not there, then there is a no formation of the tree. So we can tell if water is there, then only the wood will come. Okay. So we are telling if the water is there, then only wood will come. Okay. And the wood is there, then only fire will come. Otherwise fire cannot come. जैसे पानी दोगे तभी वृक्ष पैदा होंगे, और जब लकड़ियां जलेंगी तभी आग पैदा होगी. जब लकड़ियों को रगड़ोगे, जब लकड़ियों में के माध्यम से ही अग्नि वृद्धि होगी. सो वाटर इज द गिविंग बर्थ टू द wood and wood is giving birth to the fire. Okay, so this is the sequence. So the sequence number one, water. The sequence number two, wood. And the sequence number two, three, fire. We have to understand this concept. Okay. How many person understand this concept of the sequence of water, then wood, then the fire? You are understanding this concept? Okay. So wonderful. Now, तो अब ये बताइए कि जल से जब वुड पैदा हुआ और वुड से फायर, तो ये कौन सी घटना घटी? यांग और यिन. ये कौन सी घटना है? यांग और यिन. So in the body, the right side is the yang or the left side is the yang? Tell me. Right is the yang or the left is the yang? Which is the yang? Left is yang? Okay. It means if we want to see the pulse of water, wood, and fire,
we have to go to the left side. हमें लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा. Whether you want to go on the radial pulse or you want to go on the Taiyang pulse or you want to go on the pulse in front of the ear or you want to go on the pulse of stomach 3, if you are trying to find out yang energy, you have to go on the left side. आपको कहां जाना पड़ेगा? लेफ्ट में जाना होगा. Okay, wonderful. So let's talk about the radial pulse because radial pulse is comparatively easily accessible than the other pulse. इसको हम दूसरी पल्स की तुलना में थोड़ी आसानी से जान सकते हैं. Okay, so what we are doing, first we are going to see one bone here. यहां पर एक हड्डी मिलेगी आपको. You can palpate this bone here. If you can palpate this bone, can you palpate? If you start from here, first is depression, then we can palpate the bone here. Are you able to palpate this bone? क्या आपको ये हड्डी मिलती है? कितने लोगों को हड्डी मिली है? मिली सबको? On the side, we can palpate this bone. On the thumb side, okay? चलिए, अगर इसको भी पाल्पेट करना कठिन है तो आसान सा उपाय बताता हूं. I will tell you very easy way. So we can see this is the wrist. Exactly on the wrist, this is the point number 1 where we can keep one finger. Then the point number 2 where we can keep second finger. And the point number 3 where we can keep third finger. So the first finger will be on the exactly where we have radial crease. Because we are palpating radial artery. यहां पर हम किसे ढूंढ रहे हैं? Radial artery को ढूंढ रहे हैं. So we are keeping one finger, we are keeping second finger, and we are keeping third finger. Okay. So now, first I told you water. So suppose this is the water. ये water है. Water में से कौन पैदा होगा? बताइए. Who will be taking birth from the water? Wood. So this is the wood pulse. Now who will be taking birth from the wood? Tell me. So this is the fire pulse. So when we are keeping our hand here like this, we are checking the 3 pulse here. The lowermost pulse is the water pulse. The middle pulse will be the wood pulse. And the uppermost pulse will be the fire pulse. Those 3 pulse we are checking here. Initially, when we are checking here, we will find more throbbing in the middle pulse. Okay, in the disharmony, you might find throbbing anywhere. तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि एकदम से 3 उंगलियां के माध्यम से पाल्पेट करना थोड़ा कठिन होता है. तो पहले कहते हैं ना कि पहले जब हम छोटे होते व्हेन वी आर किड, देन वी आर लर्निंग A for apple, B for like this bit, C for cat and all. Then we are combining all everything, then apple, then umbrella, we are writing in this way. Initially we will be palpating each pulse with one finger only. Okay, at a time it might become very difficult to palpate all the pulse altogether. Okay, so let's start. I want to palpate the pulse with the thumb. Remember one thing, initially for learning purpose we are palpating in a different way, but when we are doing professional practice, that time we should know how to hold the pulse professionally. We will learn that. But initially, take your thumb and just keep the thumb on uppermost pulse here. That is the fire pulse. Which pulse? Fire pulse. Very gently, very calmly, very quiet in a way. Very gentle touch. You can keep your hand. You can take the support of the hands on the table. Keep your thumb, even this hand on the table. Give proper support both onto both hands. दोनों हाथों को ढंग से टिकाकर हवा में लटकाने से, ताकि आपके हाथ थक ना जाएं. अपने अंगूठे को सबसे ऊपर वाली पल्स पर रखिए, जिसे हम कहते हैं
the pulse of fire. And we are checking only in the left hand. Okay, right now we are checking on the left hand. So uppermost pulse you can do anyway. This anyway. When you are checking the pulse, don't use the tips. टिप का प्रयोग मत करिए. यूज द पैड्स. यहाँ हमारे चक्रास होते हैं. एक चक्रा का सेंटर होता है. वी आर ट्राइंग टू palpate the pulse with the help of that chakra. Okay, so just keep your, okay, whichever comfortable. There is no rules right now. Keep hand like this, whichever comfortable for you. Just keep the thumb here and try to palpate something. Okay, start now. इसे palpate करने की कोशिश करिए. Now do little pressure. Apply very gentle and little pressure. And apply little more pressure. Right now, just we have to palpate. Okay, now let's do the comparison with the other hand. Now, same technique will do on the right hand. Definitely, we have not discussed what is the name of this pulse, but right now, just do the comparison. So, for doing comparatively study, now we are going to check the same pulse on the right hand. Keep the thumb here. Your hand should not be like this, straight, should not be flexed, it should be in the neutral condition. Okay, come back here, and now you see the real, what is the difference between right and left pulse. Okay, again check the left pulse. Then the right pulse. Right now, if you are able to feel just a pulsation, that's enough. Initially, we have to feel just a pulsation, because many times many person are not even able to feel the pulsation. How many person able to feel the pulsation? Okay, because after some time you will be learning one pulse that is called empty pulse. In the empty pulse, even we don't feel any pulsation. जब किसी को डायबिटीज होती है ना, स्पेशली डायबिटीज टाइप 1, तो पेंक्रियाज की जो पल्स होती है वो एम्प्टी होती है. एकदम से क्लियरली यू विल बी एबल टू फील देयर इज नो पल्स. दैट इज कॉल्ड एम्प्टी पल्स. ओके, वी विल बी लर्निंग दैट. हाउ मेनी पर्सन एबल टू फील सम पल्सेशन हियर? कितने लोगों को लग रहा है कुछ कुछ हो रहा है? ओके, आर यू एबल टू फील द पल्स इक्वल और सम डिफरेंट पल्स? डिफरेंट or equal? Different. Different means D, equal means E. Equal, different. Okay. Sometimes we might feel some different pulse because the left hand is telling the pulse of fire. Just we have understood fire. Okay. Right now we have not doing the differentiation, but right now we know the left hand is showing the pulse of fire. Okay. So now we are coming to the middle pulse. So there are three. If we keep the three finger like this, now our focus is middle pulse. Okay, just focus on the middle pulse. Forget all other pulse. If you're tired, you can keep the hand here.
Okay. So this is the pulse of Buddha. Generally, if your Buddha is hyperactive, अगर आपका बुड हाइपर एक्टिव है, if your bud means liver is hyperactive, if you are having high blood pressure, if you are having migraine headache, if you are having anger aggression, this pulse will be very very fast. Okay, the differentiation will be learned later on. अब सेम हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं अदर हैंड से कि इस हैंड की पल्स और दूसरे हैंड के पल्स में क्या अंतर है, तो फिर से याद रखेंगे हम दूसरे हाथ में और ओनली फॉर डूइंग द कंपैरिजन. So keeping the hand only, keeping the finger only on the middle. First we are palpating and just leaving the middle finger here. Many times, but we are not finding the pulse here or very poor pulse here. Again, let's do the comparison. Again, check the middle pulse here. You can check with the thumb or the middle finger. Even I can feel faster pulse in the left side. Maybe my body is hyperactive. Let's go to the right. Middle pulse. Okay. So whether it's the same, equal means E or difference means D on both the hands. Okay. अगर आपके राइट हैंड की पल्स कंपेरेटिवली वीक है तो अपना हाथ ऊपर उठाइए. इफ द राइट हैंड इज हैविंग वीकर पल्स, रेज योर हैंड. ओके. So that is the metabolism, poor metabolism. That will be discussed. We are having poor metabolism. The right pulse is weak. Okay. Fine. Anyone is having left pulse weak? Left pulse is weak. Okay. Fine. So some person is having left pulse weak. Okay. Okay. Sweta ji also left pulse weak. Pavan ji left pulse weak. Okay. Okay. Fine. Everyone is having something or some condition. We are not 100% like ideal. Everyone is having something or the other, right? Okay. So we have understood the fire pulse, wood pulse. Let's go to the water pulse. The water pulse is the lower pulse. So we are keeping the hand in the lower pulse. That is what we can keep the ring finger, we can keep the thumb. We can choose any finger. Right now, there is no finger rule. Finger rule will be introduced later on. We can do any finger. Just try to feel the pulse. If you are not finding pulse, you can do little pressure, gentle pressure. If you are not finding pulse. Okay. So this is the pulse of water. Okay, lowermost pulse or the water pulse. Now let's do the comparison with the right hand. So the lowermost. We are not doing with the tip. We are doing with the finger pads. If you are not able to feel, then do little pressure. I'm sure many person is having difference in the right and the left pulse. Okay. How many person having difference? Write on D. Otherwise E if equal. Okay. Fine. So the lower pulse is water pulse. Remember, the lower pulse is the
water pulse. Now let's do the comparison between right and left hand. Whether you see the this hand or we see the this hand, the lower pulse will be water pulse only. Okay. नीचे की पल्स वाटर पल्स ही होगी, चाहे इस हाथ में देखो या इस हाथ में देखो. Okay. So bring your focus here again. So this is the water. From the water there is the origin of wood. From the wood there is the origin of fire. Okay. So this is the pulse on the left side. Okay. So we are checking this pulse in the left hand. हमने यही pulse को left hand में check किया. So if this is the left hand, pulse number 1, pulse number 2, pulse number 3. So water pulse, wood pulse, and the fire pulse. Okay. So we are moving as per the 5 element. हम कैसे घूम रहे हैं? हम घूम रहे हैं 5 elements के अनुसार. Okay. And what is the 5 element? The meaning of 5 element: water, wood, fire, earth, metal, and water. This is the 5 element. Okay. So now we are moving to the right hand. So the right hand, the right side is the yin side of the human body. और right side क्या है? Right side हमारे शरीर का yin है. Okay. Yin. So now I will make 2 hands. अब मैं 2 हाथ बनाऊंगा. So I am making both hands. Maybe that not beautiful hand, but you can understand. So this is the yang hand or the left hand. And this is the yin hand or the right hand. So we are having 3 pulse here. 1, 2, and 3. Water, wood, and fire. Okay. Now if we go on the other side, we can see the 3 pulse here. यहाँ भी हम 3 pulse देखेंगे. But they will be exactly opposite from this, because then only they are following the rule of yin and yang. तभी वो yin और yang के rule को follow करेंगे. We have to follow the rule of yang and yin everywhere. Okay. So the opposite of fire is the, in the 5 element cycle, अगर हम fire का opposite देखें, so the opposite of fire, who is the metal? Definitely metal is the, so this is the fire, and these are just a opposite. So they will make the axis number 1. ये पहली axis का निर्माण करेंगे. So on the one side there is a fire, on the other side here will be metal.
ओके, यहां पर मेटल होगा, बिकॉज दे आर जस्ट, इवन वेन वी आर डूइंग द ट्रीटमेंट, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, if the metal element is high and we want to control the metal element, we are controlling with the help of fire, because fire is suppressing the metal. Fire is controlling the metal. Okay, because fire is the grandmother of metal. Those who are learning the five element, they know this. So metal and fire is having opposite nature. इन दोनों का nature opposite है. Yes. So on the one side, on the left hand, we are having fire. On the same place, in the right hand, we are having metal element. Yes. So when we are checking the pulse of the fire pulse on this hand, जब हम इस hand में fire pulse check करते हैं, okay, that is the pulse of yang. On the same time, we can check the pulse of metal element here in the right hand. They are just opposite. They are the following the rule of yin and yang. Okay. So now again see the pulse of metal in the right hand. Right hand में metal की pulse को check करिए. And do the comparison with the fire. अब जो पल्स ज्यादा होगी वो दूसरे को डोमिनेट करेगी. If the fire pulse is high, it might be dominant on the metal. अगर इधर की पल्स ज्यादा होगी तो तुलनात्मक रूप से ये दूसरे तरफ के एलिमेंट को सप्रेस करेगी. ओके, सप्रेस करेगी. एनीवन कैन सप्रेस एनीवन. फायर कैन सप्रेस मेटल, मेटल कैन काउंटर सप्रेस फायर. दोनों एक दूसरे को सप्रेस कर सकती है, बिकॉज दोनों अपोजिट फोर्स हैं. बोथ आर द अपोजिट. नाउ यू सी किस हाथ की पल्स तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, वो दूसरे को ओवरकम करेगी, वो दूसरे को के ऊपर हावी हो जाएगी. इफ द पल्स ऑफ द फायर इज हाई, इसका अर्थ है कि यह मेटल पर हावी है. एंड द पल्स ऑफ मेटल इज हाई, इट मींस यह आपके फायर पर हावी है. सो वन पल्स इज हायर देन द अदर, it means that is the dominant pulse. So when we are checking the pulse number 1, we have to find out the left pulse is dominant or the right pulse is dominant. Okay, तो चलिए बताइए सब लोग अपनी अपनी पल्स चेक करिए. और डोमिनेंट का मतलब है DO. द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट इज DO. ओके, और डेफिशिएंट का मतलब है DE. ओके, DO मीन्स डोमिनेंट, DE मीन्स डेफिशिएंट. तो आपको क्या लिखना है कि डोमिनेंट है फायर, DO फायर और F. DE मीन्स डेफिशिएंट मेटल. अपनी अपनी पल्स लिखिए तो जरा फाइंड आउट करिए. और एक भी लिख दी तो दूसरी अंडरस्टूड है, चलेगा. यू कैन राइट एनी वन. So dominant fire means you are having yang force high in your body than the yin. आपके शरीर में yang force ज्यादा है. आपको क्या लगता है अगर किसी को हाई ब्लड, अगर किसी के हार्ट की कोई कंडीशन होगी तो कौन सी पल्स आपको ज्यादा मिल सकती है, लेफ्ट और द राइट? इफ द पर्सन इज हैविंग some condition of the palpitation or some condition of the high heartbeat, कौन सी पल्स ज्यादा होगी? Okay, now I am coming back to the left pulse, that is the pulse of fire. If you find the higher fire pulse here, अगर आपको यहां पर हायर पल्स मिलती है तो आपको थोड़ा सा पाम के ऊपर चढ़ जाना है.
और फील करना है क्या यहां भी पल्स मिलती है. ओके. बिकॉज रेडियल आर्टरी इज नॉट एंडिंग हियर. रेडियल आर्टरी फर्दर गोइंग हियर और नॉट. जाती है कि नहीं आगे? जाती है ना. If this pulse is higher and this pulse is very much easily palpable here, you have to be alert immediately. आपको तुरंत अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि समथिंग रॉन्ग विद योर हार्ट. कुछ तो गड़बड़ हो सकती है. बिकॉज वी इन द कंडीशन ऑफ द हार्ट, इवन वी कैन फाइल द पल्स हियर. थोड़ा ऊपर भी पल्स मिलती है. हमें मिलती है मतलब प्रेगनेंसी की पल्स कहाँ मिलती है? डू यू नो? प्रेगनेंसी की पल्स यहाँ मिलती है, यहाँ, इधर. पता है आपको? किसको पता है? प्रेग्नेंट लेडी के यहाँ पर पल्स मिलती है, इससे पता चल जाता है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है. यहाँ पर अल्नर पल्स. ओ दैट विल डिस्कस. पता है किसी को? यू डोंट नो दैट? आपको बस इतना ही पता है कि पल्स यहाँ होती है, बस इतना ही पता है ना सबको. वैसे ही पल्स होती है ना. अच्छा ठीक है. पल्स तो हर जगह होती है. ओके. तो कई सारे, एक हमारा फ्रेंड था, डॉक्टर संतोष. वो फट से किसी की पल्स देख के बताया था, और यू आर प्रेग्नेंट. वो कहा इस महीने पीरियड नहीं आया, यू आर प्रेग्नेंट, बेबी गर्ल इज गोइंग टू कम. क्योंकि इसमें भी है कि राइट हैंड में है तो मेल बॉय, और लेफ्ट हैंड में तो बेबी गर्ल. गजब की बात है भाई वो, है ना. बता. और एकदम 100% राइट प्रिडिक्शन. मैनी परसेंट, बट इट्स नॉट अलाउ. बताना अलाउड नहीं होता. इसलिए मेडिको लीगल, इट्स नॉट अलाउ टू टेल द सेक्स. यू कैन डू रिसर्च ऑन दिस, है ना. आप देखिए, पता करिए. देर आर चांसेस टू हैव द बेबी गर्ल, बट लेट्स सी. वी डोंट नो. देर आर चांसेस, वी कैन टेल इन दिस वे, डिप्लोमेटिक वे. ओके. लेकिन जो गर्भवती जब महिला होती है तो पल्स मिलती है अल्नर में, अल्नर नर्व. क्योंकि जब when the female is pregnant, she is having two heart. टू हार्ट होते हैं कि नहीं? कह रहे एक हार्ट ही परेशान कर देता है भैया हस्बैंड को. दो दो हार्ट वाली तो भैया हस्बैंड का बैंड बजा देगी. इतना इमोशन. है ना. अब समझो कि जब दो हार्ट हैं, और हम जानते हैं हार्ट मेरिडियन कहाँ जाता है. दिस द हार्ट मेरिडियन. तो डबल डबल हार्ट मेरिडियन. तो डबल डबल हार्ट मेरिडियन, वी कैन फील द पल्स इन द finger, small finger, vibrating pulse. If the baby boy, you will find throbbing pulse in the right hand. If the baby girl, you will find the in the left hand. Okay, in the small finger, on the ulnar nerve. Exact position I will tell you. So fine. So I was telling you, in this way we can find out. So here it means there's a fire pulse, and this is the which pulse? On the right hand, metal. Okay, metal. Fine. Okay. Just first we have to go through with all the pulse. Now, if we coming in the center, अगर हम center में आते हैं, we know water pulse, wood pulse, and the fire. So what is the center pulse? Center pulse कौन सी है? wood है. Okay. और as per the five element concept, wood is controlling earth. wood हमारी किसको कंट्रोल करता है? अर्थ को कंट्रोल करता है. In the five element cycle, wood is controlling earth. So wood can control the earth, and sometimes earth can counter control the wood. both are both can control और counter control each other. दोनों एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं. So if the left hand you are finding the pulse of wood, in the right hand you will find the pulse of earth element. Earth element is the very much important element because earth means digestion. earth का अर्थ क्या है?
Pachan Tantra, digestion. Yes. So in the right hand in the center, this is a very important pulse, and many times we can detect the thyroid, diabetes with this pulse. Okay, this pulse is telling a great story about the person. The middle pulse on the right hand. So right now we are talking because what is the earth element? Earth element means stomach, spleen, pancreas, these digestive part. They are the earth element. So we are checking the pulse in the center. Try to check it. Try to palpate something. अगर किसी की एम्प्टी पल्स है तो मुझे जरूर चैट बॉक्स में लिखिएगा या हाथ उठाइएगा. एम्प्टी मीन्स फीलिंग नथिंग. Means you are feeling other pulse, but you are not feeling anything here. Okay, we can feel throbbing. If you are not feeling throbbing, do little pressure here. Empty. Oh. Now do the touch the other side pulse. Especially those who are feeling empty. Can you feel the pulse on the other side? So left side is the Bud. If the left pulse is very high, it means Bud is higher. If the right pulse is high, means Earth is higher. So which is dominant, right? Dominant, right? Dominant Bud or dominant Earth? Write down. Which is dominant? आपका कौन सा एलिमेंट डोमिनेंट है? बुड है तो W लिख दीजिए. डोमिनेंट बुड DOW. और अगर अर्थ है तो लिख दीजिए डी डोमिनेंट अर्थ DOE. ओके फाइन. ओके सो एम्प्टी ई डोमिनेंट एंड डेफिशिएंट. एम्प्टी है. किसी ने ई लिखा है. ई का मतलब क्या है? अच्छा अर्थ डोमिनेंट. ओके ओके मंजूश्री अर्थ डोमिनेंट. ओके फाइन. So it means if the left is dominant, means your Bud is dominant. Bud is suppressing the earth. Okay. We have to control the Bud. We have to calm down the Bud. If the earth is dominant, it means your earth is over controlling the Bud. अर्थ इज काउंटर कंट्रोलिंग द Bud. यानी ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं. ये घटना केवल यहां नहीं घटती, ये घटना यहां भी घटती है. जो हमने कल जो पल्स देखी थी, लाइक द पल्स ऑफ ताइया, the pulse of stomach 3, the pulse of triple hormone 21, because the formula of yin yang applicable everywhere in each and every pulse, because this is also artery, this is also artery, this is also artery, and this is also artery. But here we can feel the artery very clearly, easily. Okay, so we are focusing here. Okay, fine. So now we have understood. Let's see the pulse number next. The last pulse, the lower pulse. Here is the water. The lower pulse is the water. Here also water. ये भी हमारी वाटर पल्स है. ओके ये भी वाटर और ये भी वाटर. तो फिर अंतर क्या हुआ? हमने कहा कि उल्ट अपोजिट पल्स मिलेगी. अंतर ये है, ये ठंडा पानी लेफ्ट में है, ये है फ्रिज का पानी, और ये उबलता हुआ पानी राइट हैंड में. ओके बोथ आर वाटर, both are kidney. We will be learning both are kidney. But the right hand is the yang kidney or the sax kidney. Sax kidney. Right hand is the yang kidney or the sax kidney or the fire kidney. That is the right hand. And the left hand is the water kidney or the kidney
cool kidney or the yin kidney. So the lower pulse is the water pulse. It's very simple. Water, water. So let's check the first cool kidney. एक बार हम cool kidney को चेक करते हैं. So cool kidney is telling about the functioning of the kidney. And we are discussing a lot about the kidney. Now check this pulse. Your right kidney. And do the comparison. What's happening? Okay. Which pulse is faster? Right or left? Which pulse is dominant? Right or left? Right is dominant. Suppose if you're doing exercise, if you're running, if you are doing going for gym, or if you are if you have done some you climbing the stairs, you might feel all the pulses are fast. Okay. But in the reality, we have to, even you are feeling all the pulse, means all the three pulse in the right hand, and you are feeling all the three pulse in the left hand. You are feeling okay, my all the three pulse are available in the right hand, my all the three pulse are available in the left hand. Then we are going to check the nature of pulse. That is the next step. Just feeling the pulse is not telling that pulse is normal. केवल पल्स को फील करना मात्र इस बात का प्रतीक नहीं है कि आपकी पल्स नॉर्मल है. चलिए अभी तो हमने पल्स को फील करना सीखा है. द रियलिटी, चलिए पल्स फील करना सीख लिया, आपको पल्स मिल रही है. अब हम देखेंगे अगला स्टेप पल्स का, और उससे हम बता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ द फाइनल स्टेटमेंट इन द TCM, we are telling these pulse. The upper pulse is called chun. This is the chun on both the side. The middle pulse is called guan, and the lower pulse is called chi or chi. Chun guan chi. Okay. So chun is upper pulse, guan is middle pulse, and chi means lower pulse. So enough for today. Now we'll be discussing tomorrow. If anyone is having question, please raise your hand. किसी को कोई प्रश्न है? अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कि वो प्रेगनेंसी वाली पल्स और वो सब पल्स, वो तो सब डिटेल में आगे समझाया जाएगा. देयर इज अ पार्ट नेक्स्ट डिस्कशन. यस प्लीज ससद जी. या Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग. Sir, while seeing the pulse, in the same line we have to feel the pulse, or इधर उधर भी feel कर सकते sir? डेफिनेटली वी हैव टू होल्ड द फिंगर्स इन द सेम लाइन. ओके. इधर उधर करने से विद एक्सपीरियंस वी कैन अंडरस्टैंड, और थोड़ा हम इधर उधर कर सकते हैं, बट अदरवाइज वी हैव टू ट्राई टू फील ऑन द सेम लाइन. Sir, my next question is, the first pulse should be on the wrist grease or below it? First pulse will be at the location of lung 9 point, and we know where is the lung 9. Lung 9 is here. Exactly. So you are here. So now we can see this is the location of first pulse here. Exactly on the location of lung 9. Okay. So I will write down here. Suppose this is the hand. We can draw one middle line, one line exactly on the side. So this is the side line. This is the central line. In between, we have to check the pulse here. And this is the location of first pulse. As soon as the wrist is ending on the wrist crease, near what? Wrist crease, right? And we already know this is the location of lung 9 acupuncture point. Got it? Yes, sir. Yes, sir. My next doubt is, see,
first pulse is there, immediately the second pulse, or any place between the first and the second The pulse? second pulse will be exactly on the styloid process. We can feel the bony part here. Can you feel the bony part here? Answer. So the second pulse will be on the bony part. So if we feel the bony part here, the second pulse will be on the bony part. We can feel it. The elevated bony part, that is styloid process. Answer. That is the place of second pulse. Okay. Okay? Okay, okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Welcome. Yes, Madhvi ji. Namaste, sir. हाँ नमस्ते माधवी. What is the right time to check the pulse, sir? What is the right? Right time to check the pulse was The right time to check the pulse, I will tell you actually our when I was studying in college, my very senior Bedaraji used to take the pulse morning before he used to start checking the pulse morning 6 o'clock, and 6 o'clock to 9:30 or 10 o'clock he used to see the pulse. That is the ideal time. Till that time, neither patient is eating anything, even Bedraji not eating anything. Both, because I asked her why not eating anything, because patient is not eating anything, that is right, because patient after eating their pulse is changing. He told because I also have to be little intuitive light myself, so he used to take the breakfast after finishing all pulse. Okay, this is the way number one. Way number two, I have seen many professionals, they are checking pulse anytime during the day, but at least after the meal 2 hours we should not check the pulse. Like in my clinic, if patient is coming in the evening and I have OPD time 5 to 9, I can check the pulse in the evening. At least the 2.5 hour patient is not eating anything, because as soon as person eats something, the middle pulse will be higher. So it might give a wrong prediction, right? So the ideal time morning, empty stomach. But the meaning of empty stomach is not like that. The patient, you told, okay, you come empty stomach, and patient is sitting for the pulse and coming 12 in the afternoon, दोपहर को 12 बजे आ रहा है, उसका पित्त बढ़ गया, भूख लग रही है तेज, उसका पित्त बढ़ गया है ना, तो उसका वैसे ही वो पल्स थ्रॉबिंग हो जाएगा. So that is not the ideal time. Empty, but patient should not be too hungry. If the patient is too hungry, it means pitta is higher. Okay, middle pulse will be higher that time. Thanks. Okay. Yes, Lata ji. हाँ सर, आपने पल्स जो लेफ्ट साइड पल्स है थम्स की तरफ आ रहे तो उसकी वजह हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है. लेफ्ट साइड पल्स है और किस तरफ आ रहा है वो? ऊपर की. लेफ्ट साइड का पल्स ऊपर आ रहा है ना? हाँ. या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट आई विल टेल यू राइट नाउ, डोंट रीच ऑन डायरेक्टली ऑन द प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन नीड लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऐसा हमारी पिछली क्लास में हो चुका है. हमने बोला था मास्टर टूम की क्लास में, इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम नी प्रॉब्लम माइट बी, सो वी आर पुटिंग द पॉइंट ऑफ हार्ट. अच्छा. मास्टर टूम में ऐसा कंसेप्ट है ना, इफ यू आर हैविंग नी प्रॉब्लम वी हैव टू ट्रीट द पॉइंट ऑफ हार्ट. तो पेशेंट डिप्रेशन में चला गया कि मुझे घुटने का दर्द है, मतलब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है. तो उसके बाद मुझे फोन किया कि 2 दिन से नींद नहीं आ रही है, उनकी बीपी बढ़ने लगा इस कारण से. So don't go on the conclusion right now, but you're right. The left hand pulse is moving upward. That might be heart condition. जस्ट 2 डेज से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट के थोड़ा पेन हो रहा है. तो और लेफ्ट पल्स कैसी आ रही है आपकी? थोड़ा ज्यादा आ रही है. हाँ, तो डेफिनेटली लेफ्ट पल्स थोड़ी इंक्रीज हो सकती है, तो उसे कंट्रोल कर लीजिए. आप एक्यूपंक्चर करते हैं? हाँ, एक्यूप्रेशर करती हूँ. एक्यूपंक्चर हाँ, मैंने एक्यूप्रेशर करते हैं. तो क्या करना है इसके लिए, फिर आपको क्या ट्रीटमेंट करेंगे? लेफ्ट हैंड में उंगली के नीचे जो पॉइंट्स आते हैं वो करती हूँ मैं. कर रहे हैं आप ऑलरेडी? लेफ्ट साइड हार्ट के पॉइंट और राइट साइड लीवर के है ना, दोनों सेम पॉइंट. तो मैं नहीं, आप जो कर रहे हैं उससे आपको आराम है? हाँ, थोड़ा आराम आ रहा है. अगर आराम आ रहा है तो करते रहिए, नहीं आएगा तो मुझे मैसेज करिएगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा ठीक क्या करना. मुझे बता दीजिए ना. तो बता देते हैं. पेरिकार्डियम मेरिडियन जानते हैं आप? नहीं सर. पेरिकार्डियम मेरिडियन नहीं जानते? नहीं सर, मैंने अभी अटेंड किया आपको.
अच्छा, तो आप पॉइंट कैसे लगाते हैं जब मेरिडियन नहीं जानते? तो सुजोग करते हैं क्या? हाँ सुजोग करते हैं। ओके, तो फिर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको आई हैव टू टेल समथिंग अबाउट योर कंडीशन, बिकॉज अगर आप मेरिडियन जानते होते तो मैं आई कैन टेल यू सम पॉइंट्स, देन अच्छा। आई प्रोवाइड यू सम अदर रेमेडी, check your blood pressure, and also you can also post in the group कि blood pressure आपको हार्ट में जो पेन हो रहा है क्यों हो रहा है, whether your blood pressure is normal or not, okay? और बाकी हम सबको पता है ना, if there is chest pain, if there is a problem with the heart, we are using pericardium meridian, and we are using Leo connecting point, source point, G cleft point of the pericardium meridian to immediately fixing the heart, वो हम उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्यूपंक्चर नहीं जानते, there are many other methods, so you message me, I will reply, okay? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। यस अनीता जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। ये जो तीनों पल्स हैं जो LU9, LU8 और LU7 पर आएंगे सर? LU9 LU8 पर आएंगी, लेकिन तीसरी पल्स LU7 पर नहीं आएगी, क्योंकि LU7 तो ऑफ द रूट होता है ना? अच्छा, और सर अगर राइट हैंड में हमें थ्रॉम्बिंग पल्स मिल रही है तीनों, हाँ, और लेफ्ट हैंड में वीकर पल्स है, तो उसका क्या है मतलब? तो उसका एक एक मीनिंग है, फिर हम चेक करेंगे कि तीनों में से कौन सी ज्यादा वीकर है, राइट? मिडिल पल्स वीकर है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली विल डू प्रिडिक्शन, क्योंकि हमने बता दिया एक मेटल है, एक अर्थ है ना, एक वाटर है, तो मेटल वीक है, तो मेटल क्यों वीक है, ओके? फिर उसके अंदर फिर अर्थ वीक है, तो तीन हमने समझा ना कि राइट हैंड वीकर है, ओके? अब राइट हैंड में भी कौन सा वीकर है, तीन में से कौन सा वीकर है? नहीं तो सर, लेफ्ट हैंड वीकर है सर। ओके, अगर लेफ्ट हैंड वीकर है तो फिर उसमें से भी ज्यादा वीकर कौन सा है? वाटर है कि वुड है कि फायर है? उसका ट्रीटमेंट करेंगे हम, है ना? तो हमें उसे पाल्पेट करना है, एक एक करके देखना है कि कौन सा वीकर है, फिर क्यों वीकर है, दूसरा वालों से सप्रेस कर रहा है क्या, है ना? उसका अकॉर्डिंगली वी विल प्लान द ट्रीटमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस? डायग्नोसिस का मतलब है कि चलो बीकर तो है लिवर, लेकिन क्यों वीक है, कौन इसको मार रहा है, कौन दबा रहा है? दबा खुद रहा के खुद के है। कारण ये परेशान है कि कोई दूसरा मेरिडियन आके इसे सप्रेस कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट, बिकॉज देयर आर मेनी पैटर्न ऑफ द लिवर, ओके? ओके सर, थैंक यू सर। अकॉर्डिंगली, या यस शिवाजी। थैंक यू सर। वेलकम। सॉरी सर, मेरे को राइट हैंड में मेटल वाला पल्स ज्यादा स्ट्रोंग है, बट मेरा बीपी हाई है। फायर वाला इतना स्ट्रोंग नहीं है। ओके, तो बीपी हाई होने के कई कारण होते हैं, क्योंकि बीपी जो होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर क्या है? हाई ब्लड प्रेशर माइट बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, मे बी आप जैसे मेटल हाई है, मेटल, व्हाट इज द मेटल? एक्यूपंक्चर, यू नो, एक्यूपंक्चर, TCM, 5 एलिमेंट्स, लंग, लार्ज सर, इंटेस्टाइन, तो मे बी वी हैव टू वर्क ऑन द, यही तो बात है। आपने कहा मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, अब हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करना है, तो हम किसे ठीक करेंगे? वी विल वर्क ऑन मेटल, वी विल वर्क ऑन लंग्स, वी विल वर्क ऑन लार्ज इंटेस्टाइन, we have to work there. So we will find out why the high blood pressure is there, because high BP because of many things. High BP might be because of heart. High BP might be because of stress. High BP might be because of the lung disharmony, sadness, बिकॉज depression. ऑफ स्ट्रेस Yeah. इन केस। तो स्ट्रेस है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो स्ट्रेस के कारण फिर आपका, मेटल। वी हैव टू वर्क, वी माइट हैव टू वर्क ऑन मेटल एलिमेंट। हमें उसमें और भी देखना होगा कौन सी पल्स है, क्योंकि अगर आपकी पल्स तो हाई है लेकिन फ्लोटिंग पल्स है, उसमें कई और भी पल्स होती हैं, बट दैट इज फॉर श्योर अगर आपकी लेफ्ट पल्स वीक है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि लेफ्ट वाला पार्ट वीक है, आपका हार्ट वीक है। अभी मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं एक संभावना बता रहा हूं, मेरे शब्दों को बिल्कुल सीरियसली मत लीजिएगा अभी, नहीं तो, है ना, इट माइट हैपन कि ये पल्स वीक है, इसलिए मैंने कहा आप लिखो डोमिनेंट पल्स एंड वीकर पल्स। प्रॉब्लम डोमिनेंट में हो सकती है, प्रॉब्लम वीकर में भी हो सकता है हम डोमिनेंट को ठीक करें, हो सकता है डोमिनेंट को ठीक ना करें, हम वीकर को स्ट्रेंथन करें। हो सकता है हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी हो, आपको रात को लेट नींद आती हो, सुबह कमजोरी रहती हो, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है। रात को कितने बजे सोते हैं आप? सर, रात को तो सो जाती हूँ सुबह कितने बजे उठते हैं? 10, 11, 5। 5 बजे उठ जाते हैं सुबह, हाँ हाँ? जी। So there might be many different pattern. We have to understand and PW2 पॉइंट से आराम मिलता है okay. ऑयल स्टिमुलेट करने से।
Yeah, fine, fine, fine. Okay, triple warmer 2 is good point. Yeah, Yes, sir. yeah. Yes, you can work till you're not able to reach on the diagnosis. लेकिन हाई बीपी के और भी तो पॉइंट्स होते हैं, कई पॉइंट जी. होते हैं. देयर मेनी अदर पॉइंट्स, है ना. LI11, stomach 9, heart 3, देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स फॉर द हाई बीपी. हाई बीपी को ठीक करना है तो आपको उसके रूट कॉज को ठीक करना होगा, है ना. केवल हम हार्ट से हाई बीपी पता नहीं कर सकते. कभी कभी लिवर फायर ज्यादा होती है तब भी हाई बीपी होता है. हार्ट की वीकनेस से हाई बीपी हो सकता है. किडनी से भी हाई बीपी होता है कि नहीं होता. Yes, sir. देयर आर मेनी रीजन फॉर हाई बीपी. Yes. So we have to work on the root cause. Then we'll able to work on the blood pressure. Okay. Thank you, sir. Welcome. Yes, Rekha ji. So actually, I just wanted to know how with this can if we don't feel the palpation, so what to do in such case? We are not If we feeling don't palpitation not anywhere. yeah Like neither this end, no. yes yes It yeah means if you don't feel at all. yeah. So it means we are not on the right place. So we have to understand which is the right place of radial artery, and Okay 2-3% we will check. If we are not feeling palpation in 2-3%, it means we have to correct our position. Okay, so that's why I'm telling yeah that where is exactly pulse is, कहाँ पर real pulse है. Pulse is not on the side. Pulse is not in the okay center. Pulse in between here. Suppose if you are okay going on the wrong place, in the Chinese acupuncture, you will see many persons seeing the pulse here. Okay, there are many persons. So here you will feel the pulse, but maybe you are going on the wrong place. You will not able to feel the pulse. So right now, first you have to start feeling the pulse. सबसे पहले okay आपको पल्स को फील करना होगा. अरे भाई, एप्पल की घड़ी भी पल्स को फील कर लेती है तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे. आजकल तो घड़ियां आ गई हैं ना, पल्स को फील करती है ना. वो पूरा आपका हार्ट रेट, बीपी ऐसे बस पहन के रखो, वो बताती रहती हैं. और आपका बीपी बढ़ेगा तो वो अलार्म संकेत दे देती है, योर बीपी इज हाई, योर बीपी इज हाई, योर बीपी इज हाई, योर पल्स रेट इज हाई, योर पल्स रेट इज हाई. तो वो मशीनें पता कर लेती है, तो हम तो कर ही सकते हैं ना. हमें बस अपनी okay उंगलियों को सही जगह रखना है ना. yeah and how can this be balanced sir? Yeah, that is Yeah the question. First, we have to understand what is yin imbalance. and yang yeah Then we'll able to understand how to balance. Yeah, we are okay going to discuss, but in yeah one day yeah it's not possible to discuss. okay Yeah, thank you हाँ, sir. welcome. Yes, Kavita ji. थैंक यू सर. Yeah. आपने जैसे कल बताया कि हम यहाँ सिर्फ अगर थोड़ा टाइम हाथ रखें तो डायग्नोस, अगर ज्यादा रखें तो Treatment. ट्रीटमेंट. हाँ, The same way, can we put our hand here and treatment is possible? definitely. Yes, it's applicable everywhere. अगर आप पल्स को बहुत लंबे समय तक पकड़ के बैठे रहते हैं, 3-3 मिनट 5 मिनट, तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो. तो आप देखेंगे, दिस हैपन मेनी टाइम विद मी, कि अगर मैंने एक व्यक्ति की पल्स चेक की और मैंने देखा इसकी पल्स वीक आ रही है, मैंने कहा यार, जब when I was learning pulse and I used to check pulse again and again many times. Okay, 30 seconds, then again 30 seconds, then 1 minute. तो 2-3 बार चेक करने के बाद पल्स चेंज हो जाती है, हो जाए. यू विल ऑल्सो फील, अरे इसकी तो मिडिल पल्स वीक थी, नाउ इट्स बिकमिंग नॉर्मल. देन यू विल नॉट गेट द रियल पल्स, बिकॉज योर एनर्जी ऑल्सो वर्किंग, आपकी ऊर्जा भी काम करती है. If your energy, that's why yesterday we have practiced little bit about the energy channel openings. That part is pending. वो पार्ट हम फिर से डिस्कस करेंगे. आज हमने सोचा थोड़ा पल्स के बारे में समझते हैं. जब तक हम अपने चैनल्स को ओपन नहीं करेंगे तब तक हम वो अधूरा रहेगा. तो हम क्या करते हैं कि when we are checking the pulse, if we are holding the hand for longer time, the person pulse will change. That's why we have to do the pulse diagnosis within a minute. Means we have to feel the pulse within a minute. Prediction we can do in many minutes. हम सोच सकते हैं क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन 1 मिनट के अंदर पल्स को फील करना आना चाहिए. अगर आप उससे लंबा पकड़ के रखते हैं, पल्स बदल जाएगी. किसी ने फील किया ऐसा, जो लोग पल्स करते हैं, अगर कोई करता है, एनीवन, है ना, होता है ना सर. यस, इट्स हैपनिंग. या ओके, एनी क्वेश्चन, एनीवन? ओके, किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ उठाइए. यस, जगदीश जी. यस, यस प्लीज.
they say that when you see the pulse, you have to tap the radial nerve and then see Yeah, the pulse. yeah. So we can do it. Sometime what happened? Person like is having very lethargy condition and all. We can tap. We are doing Chinese Yeah. people. Chinese people do that. Yeah, many Vaidyas they just tap Yeah. it and then see the pulse. Yes, yes. Okay. Even many Thank you. Vedas do that. So what Yeah. happened? The pulse coming in the normal flow. We can do that. Okay. Yeah. Thank But you. everyone Thank you. don't do that. Every person Oh. is having different way. Sometimes you will see Exactly. many person holding the pulse like this. Okay. Thank you. Many person holding the pulse like this. So the many person having different things. Okay, we can do that. It's our depends on our own comfort and convenience. Okay. Thanks, sir. Welcome. Okay, thank you so much, everyone. I think everyone asked the question. If you have any question, you can put in the chat box or you can put in the group. Now, we'll see you in the next class. Thank you so much. Let's close the session. So we have done 2 days free introductory class for everyone so that you can understand, because many person having doubt that how can we learn Pulse online. But then since the COVID-19, we have find out everything can be learned online. So हम हर चीज को ऑनलाइन सीख सकते हैं और हम सीख रहे हैं. So now in this way, now as we have planned that 2 days we will be doing free class so that everyone can understand how we will be moving. Now there might be next class only for enrolled participants. If anyone interested, so there are 2 levels. You can enroll for first level, and if you find interesting, you can go for second level. Also, in the 2 level, we will be covering full course and we will be seeing all the pulse which is written in the TCM. Okay. So let's close the session, and if any questions, you can put in the group. अभी ग्रुप में ज़्यादा हैप्पी वो गणतंत्र दिवस ज़्यादा के मैसेज मत डालिएगा, है ना, हो गया वो सब. Okay. Any question, you can send me personal message on the WhatsApp or in the group. Thank you so much. Closing now.